हेलो मित्रों, आज तमने मैं वरुण देव बताऊँ। अमरा भाषा में अमे पांदेव डूंगर पर आवेला से आ पांदेव से अने आ तमने अत्यारे मैं बताऊँ। आ जोई लो, आ एक वरसादी देव से अने अहींया खूब सरस कोईनु बी काम सरस थई जाय अने कोई भावथी आम श्रद्धाथी राखे ने त्यारे सरस काम थई जाय। खूब ज हवे तमने आ बाजुनो सीन बताऊँ। खूब मस्त सीन छे, आ जोई लो। अने आ डूंगर पर छे आ एनु घर मंदिर एनु आम आना पर कई पुड़िया नाखीने एम ज कई नाखता नथी तो बी आ रही जतुं छे। अने खूब सरस आ एटलो पवन आ डूंगर पर छे ने, खूब ज पवन आवे तो बी आनु मंदिर आ उड़तुं नथी, पवनथी कई उड़ी नथी जतुं। अने खूब सरस। अने अत्यारे अमारा विडियो ने फॉलो करता रहेजो, आ विडियो जोता रहेजो। अने आ जो तमने अत्यारे मैं जोता रहेजो, आ तमने अत्यारे बताऊँ। आ वरसादी देवनु घर से मंदिर से एना पर आ एटलो पवन आवे ने तो बी पवन थी उड़तुं नथी। जोई लो, तमने नजर में देखातुं हशे, नजर में जोई लेजो। अने अत्यारे तमने पाछो मंदिर ज बताऊँ। मंदिर में आ हवे बधा नारियल सोलीने सोटला अहींया नाखता छे। जोई लो, आ मित्रों बधा बेहेला छे, आ दर्शन करवा आवेला। हाँ, आ जोई लेजो ने आ एटलो अहींया एटली श्रद्धाथी आम कोईनुं बी काम सफलता थई जाय। वरसादी देवनुं छे आ एक मंदिर। आ उपरथी एटલું कई नाखता नथी तो बी उड़तुं नथी। आ वरसादी देव छे, सादी भाषा में पांदेव कहेता छे। ने अत्यारे आ अहींनुं सीन बताऊँ तमने। खूब ज सरस। अमारा विडियो ने फॉलो करता रहेजो ने आ बाजनु तमने सीन बतावी दऊं। आ जोई लेजो। खूब ज सरस आखा वेलाथी ढंकायेलुं। एटलुं सुंदर देखाय ने, तमे मारा विडियो ने फॉलो करता रहेजो। ने आ एटलो सुंदर अहींया बेहवानी मजा आवे। अने आखो साइडो पवन पण एटलो सरस लागे ने, खूब सरस पवन लागे ने। आ जोई लेजो, बधु सरस वातावरण अहींया मस्त मजा आवे। आ मित्रों आ बधा दर्शन करवा आवेला रहेला छे। अहींया छे ने जेटली श्रद्धा एम भावथी श्रद्धा राखे एनुं काम सफल ज थई जाय। आ वरसादी देव अने काम सरस। जोई लेजो, आ मंदिर छे। आ वरसादी देव कुदरती प्राचीन मंदिर छे पाछुं। आ ने अहींया राजा पहेलेथी राजा आवतो हतो अने अहींया दर्शन करीने जतो हतो। आ खूब सरस। हवे तमने बीजू मंदिर बताऊँ। अहींया एक स्वर्गनुं आखुं स्वर्गना देव बधा अहींया आगळथी अहींया स्थान ज छे। अने आ प्राचीन मंदिर छे। आ जोई लो, अहींया एटलो पवन आ सीजन में एटलो पवन लागे ने, खूब पवन लागे। अने आ स्थळ छे ने कई जग्याए आवेलुं छे? धरमपुर वलसाड जिल्ला में। अने आ धरमपुर विस्तार में, धरमपुर तालुका में अने पीपरोड गामे छे। अने पीपरोड थी धरमपुर थी कम से कम 25-30 किलोमीटर हशे एवो अंदाज में कहतो छूं। अने खूब ज सरस
આખું વાતાવરણ પવન તો એટલો સરસ એસી જેવો લાગે ને, ખૂબ મજા આવે. તમે મારા વિડીયોને ફોલો કરતા રહેજો. આ જોઈ લો, આ દેવો બધા આગળ પ્રાચીન સમયના, અને અહીંયા કનશ્રી દેવ કહેવામાં આવે છે. આ અત્યારે નીચે જતો છું. આ જોઈ લેજો, આ બધા દેવો, અને આ બધું ડુંગરમાં છે દેવો બધા. અને અહીંયા જેટલું બી શ્રદ્ધાથી કામ કરે ને એટલું સરસ જ કામ થઈ જાય, અને ભાવથી થાય. આપણે ભાવથી શ્રદ્ધાથી એને દર્શન કરવા જોઈએ, એટલે કામ સફળ જ થઈ જાય. કેટલુંક બી આમ જોઈ લો, એટલો પવન સુંદર આ એરિયો એટલો સરસ લાગે ને, ખૂબ જ સરસ છે. મારા વિડીયોને તમે ફોલો કરતા રહેજો. કામ સફળ. કોઈએ બી આમ પીપરોળમાં આ ધરમપુર વિસ્તારમાં અને પીપરોળ ગામમાં છે આ વરસાદી દેવ, અને વરસાદ અહીંયા પડતો છે. આપણે શ્રદ્ધાથી માનીએ તો વરસાદ અહીંયા પડે. આ એક મંદિર, પ્રાચીન મંદિર છે. આ પહેલેથી પહેલેથી આ મંદિર, અહીંયા રાજા આવીને દર્શન કરતો. ધરમપુરનો રાજા અહીંયા આવીને દર્શન કરી જતો હતો. ખૂબ જ સરસ. એક આના પર કંઈ જ નાખે નહીં, કંઈ બાંધે નહીં, તો બી આ એક મંદિર પવનથી એટલી શ્રદ્ધા છે એનામાં, પવનથી ઉડતો નથી. અત્યારે આના પર ખાલી પુળિયા નાખી દે, બાંધવાનું કંઈ નહીં. એટલું સરસ આ વરસાદી દેવ અને શ્રદ્ધા છે. હવે મારા વિડીયોને ફોલો કરતા રહેજો. આ પીપરોળ ગામનું છે, અને ધરમપુર વિસ્તાર પીપરોળ ગામનું છે. અને આ મારા વિડીયોને ફોલો કરતા રહેજો. જય પાનદેવ.